Hi, hello everyone. আজি একটা ন্যাশনাল ইস্যুজতে ডিসকাস কৰি যাব আপোনালোকে সবেই জানি লাগিব ৰিসেন্টলি আম্বেদকাৰ ৰোডে পাৰ্লিমেণ্টে মেঘালয় এমপি নাগালেণ্ড এমপি শ্ৰীমতী পানয়ং কন্যাক সৰি ফৰ দ্য মিছপ্ৰনাউন্সিয়েশ্যন তাই ৰাহুল গান্ধীকে একিউজ কৰিছে আৰু এইটো লগা নিউজটো national issue you can check sabi everywhere itia do youtube te itu laga khobor hi pura bhorta hoina ase and recently bjp morcha man accuse korise ki rahul gandhi laga age te maki khan do safe nai koi na man dangor accusations korise हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक श्रीमती कोन्याक उनके साथ अशालीन असभ्य अमर्यादित व्यवहार किया गया much of unhealthy criticism so let's discuss on it tadi ek bar sai sabo br ambedkar laga rote home minister amit shah bra parliament e edu guise नेवर अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना ना सुनिए तो सुनिए ना आप सुनिए ना मैं बताता हूं हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो tate bra rushuru jise to tate protest oppositions party an tate protest kori thakise to iman bidore do na chai jabo holibi shrimati konyagra likhala do ki rahul gandhi and his oppositions party tan aise tan etu rasta de dekhe rasta de bi thakise olibi etu rasta na jaigina tate ahise guise aro rahul gandhi was so in a close proximity taila usure bhoi jaise to she felt so uncomfortable etu ek bar sai sabe Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable. बीजेपी सांसद कौनक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज जब धरना प्रदर्शन हुआ उस वक्त क्या हुआ था, अगर आप बता पाएं? I was standing just below the staircase here in Makar Dwar. Then what happened was there were a lot of people. Then Shri Rahul Gandhi ji just came in front of me, very close proximity. I felt uncomfortable. And then he started shouting at me, which I did not like. Because there is a certain way that things should be done and we should respect each other as honorable members of parliament. But then what he did, what he was shouting, it was in the close proximity because when people come, we try to give way. But when there were so many of us standing and protesting, there was no space to move actually. So what happened today is very sad. I feel disheartened because this is not the way that people should treat each other. And as an ST member and as a lady member, I really feel bad. Of course, if necessary, maybe I can protect myself, but then that would seem very unbecoming, unseemly. So what happened today was really bad. He came this close that you got really uncomfortable. I felt very uncomfortable and he shouted at me, but we should not shout at each other. You shouted at him? He just shouted, he was saying something and we shouldn't be saying that. So he was shouting at me, which I really felt uncomfortable about. So you're going to raise this matter before? I have submitted a complaint to Honorable Chairman Rajya Sabha seeking his protection on this matter. Yes. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable and he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. Leader of opposition Shri Rahul Gandhi ji, बहुत close proximity में आके I also did not feel comfortable. अच्छा नहीं लगा
फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। तो ऑन द अदर हैंड द ऑपोजिशन पार्टी सेज दैट प्रोटेस्ट কৰা তমতে এইটো ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি কিনে থাকিছে, ব্লক কৰি কিনে থাকিছে, ৰাস্তা জ্বালা ৰাস্তাটো ব্লক কৰি কিনে থাকিছে। কি থাকিলে বি এইটো লিডাৰ অফ অপজিশ্যনছকে ৰাস্তা দিব লাগে, যাবলা ৰাস্তাটো দিব লাগে কৈ কিনে এইটোতো প্ৰিভিলেজ LOP লিডাৰ অফ অপজিশ্যনছকে দি কিনে আছে। এইটো দিয়া নাই, কি ধাক্কা ধাক্কি হৈছে, কি হৈছে এইটোতো অপজিশ্যনছ পাৰ্টিৰ পৰা নহয়, উইদিন BJP পাৰ্টি, উইদিন পাৰ্টি মেম্বাৰ বা তাহান ভিতৰতে লাগা লাগি ধাক্কা ধাক্কি কৰি কিনে তাতে গিৰিছে, তাতে ইনজৰ্ড হলাটো আছে কৈ কিনে এইটো কৈছে। में होगा ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। ধাক্কা ধাক্কি পৰা ইভেন ICU तक पहुंची जाइए। एक MP को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक MP को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी? BJP লিডাৰ এইটো একিউজ কৰিছে কি ৰাহুল গান্ধীটো আহি কিনে ভিজিট কৰিবি কৰা নাই কৈ কিনে এইটো একিউজ কৰিছে। और ये अहंकार इतना था कि एक सांसद को जो सिर पर गंभीर चोट लगी, खून निकल रहा था, उनका हाल भी नहीं पूछा और अपनी अकड़ में वहां से चले गए। মহান চাবলৈ পাৰাটো এইটো ফুটেজতে চাই যাবি, এইটো ফুটেজতে চাবলৈ পাৰাটো ৰাহুল গান্ধী আহি কিনে তাতে তাই এইটো ইনজৰ্ড হোৱা তাতে চাই থাকিছে, তাতে চাইছে। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना को ये पुश में इतना को इन्होंने धकेला। ये नॉट पुश यू, ये नॉट पुश यू। আপুনি এখন এইটো ফুটেজতে চাবলৈ পাৰিব, ৰাহুল গান্ধী আহিছে আৰু তাই কথা কৰিছে, এইটোকে চাইছে। তো এইটো বি একটা মিছা এলিগেশ্যনছ একিউজেশ্যনছ আছে কৈ কিনে এইটো বি আপুনি এখন বি দেখিবলৈ পাৰিব। এখন লগা MP টো মাহান ইলেক্ট কৰে, মাহান লগা MP তাতে পাৰ্লিমেণ্টে যায় কিনা বি ইট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা, আমি এখন লগা ভইচ উঠাবলৈ তাহানকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনছ দি কেনা তাতে ইলেক্ট কৰি কিনা তাতে ফটায়। হ'লে বি অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম মাহান চাবলৈ পাৰাটো কি প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ হবি নহ'লে মশ্যনছ এড্ৰেছ হবি। over a period of time ambikan laga MP when she address tai Modi laga scheme laga presi kuri thake edola Modi laga scheme laga hi nolibi tai kam kura laga edu press edu glorify kuri thake. Working of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in Honorable Prime Minister Narendra Modi's historic third term. And everywhere you go in Nagaland, you hear people saying constantly, Modi ke bishi khushi paishe, which means we are very grateful to Modi. It is a fact that Honorable Prime Minister Modi ji is hugely popular across the northeastern states because of his wise and astute leadership. I think that it is her responsibility to address the problems of the state.
So far, we can't able to witness, we can't able to see none of such important issues that she has raised in the parliament. One question that I wanted to ask is also that tai Rahul Gandhi usure ala just a close perspective tai lo usure stand kurigina edubi itu bhal lagya nai edu to khushi pa nai koikina national issue banai dise accusations kurise allegations lagai ase assault allegations lagai ase. So I wanted to ask, how did she felt when our own people, our own Naga brothers were denied justice? Supreme Court bra declarations dishe ki oting laga incidents massacre hola do no criminal proceedings will be taken up. Koikina edu declaration edu verdict dishe. Ate mari dia laga amma baba khan bacha khan brothers sisters khan families khan, what about their feelings? Ekta opposition's leader bra taila age de bohala etu khushi pane etu insecurity paise an attack on her dignity. So how did she felt when her own people were slaughtered and she did not raise those points in the parliament? So etu bhi ekta bhabi bole etu bhi ekta bhabi bole ekta kotha ase. To apni khan lau hate rakhi dibo apni khan ki bhabi ase apni khan etu right ase na wrong ase etu apni khan laga te rakhi dibo. Recently dia central brabi edu amar do harai digina hatai digina ida boundary dalai bo gina border regions te majority do Konyak tribes kan ase. Why is she not raising the voices, making it a national issues in the parliament on such issues? Naga solutions te kile voice na kure, Naga solutions te kile edu national issue na banai. 2015 they were accord sign kurise, 2018 they were already another accord sign another agreement sign kurise. Iman delay hoigina ahi ase kile iton issues te parliament voice no kore, kile center ke question in na kore for the delay of the Naga solutions. Khali idu nohigna amihen laga state laga issues te kiman raise kurise, free movement FMR de kiman raise kurise, Naga issues te raise kurise, kiman issue raise kurise, corruptions te multiple corruptions te kiman issue raise kurise. Naga people did not send our MP, our representative to press the Prime Minister of India, but we sent our representative to voice out for us, to represent the voice of the state, to take the problems of the states and raise it and questions the government of the day to bring a solutions about it. And everywhere you go in Nagaland, you hear people saying constantly, Modi ke bishi khushi paise, which means we are very grateful to Modi. Modi to inega korche, Modi to inega korche na. We are only able to see such kind of glorification, such kind of praises of the Modi government, rather than voicing the genuine issues, the genuine problems of the state. Manipur MPs kan hi ami khan laga voices kan raise kore jo. Rahul Gandhi Nagaland be aise, he has given an assurance to take the Naga issues. This seems to be almost a sort of a theoretical concept. It was the commitment of the present government. But have they given any sense of how this is going to be implemented? That is up to government of India. But they have not given any sense. They have not. And one of the humblest politicians after Manik Sarkar, one of the humblest politicians I have seen after Manik Sarkar is Rahul Gandhi, who has a concern, a genuine love for the people. To this narrative that women are not safe in front of Rahul Gandhi, women are, the kind of narrative that is making against Rahul Gandhi is very wrong. It would wrong ase. Moi India te ekta humble bahal politicians after Manik Sarkar, koik na ekta Tripura te ekta chief minister thakise.
20 years te tai chief minister thakise edun chen humble dikhia do Rahul Gandhi ase manuke morom kora do to edu narrative na ki Rahul Gandhi la age te do maki khan safe na hai inega ase Rahul Gandhi do inega maki khan ke izzat nokore assault kore koi kina tu kola na missa narrative ase strongly against this narrative be it Sir Rupin Sharma hobi be it Andrew Kevichusa hobi or be it Mahila Batiland hobi or be it faith in actions hobi তাখান নাগা মানুহ লগা নাগালেণ্ড লগা নাম একদম ৰোশন কৰিছে পজিটিভ ৰোশন কৰিছে নাগা মানুহ নাগালেণ্ড এনেকুৱা আছে গৈ কিনে একদম শান আনিছে হলিবি এতিয়া নাগালেণ্ড কি কৈছে হাউ নাগালেণ্ড আৰ আইডেণ্টিফাইড ইজ এনেকুৱা আইডেণ্টিফাইড কৰি আছে और जो नागालैंड की महिला है इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं एक्टिंग ड्रामे बास আছে গৈ কিনে এইটো আইডেণ্টিফাইড কৰিছে তো হোৱাট ডু ইউ থিংক পিছু ক'ব লাগিছে হলিবে আজিৰ কাৰণে ইমান তাকি কৰি দিব আৰু আপুনিখন কি ভাবে whether she is right or not whether তাইকে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে না নালাগে let us know in the comment section